So hello everybody. It's the first time we are going to do on Professor Praharaj channel is a news review. ये एक अलग सेक्शन हमने स्टार्ट किया है आज से कि इसमें हम नॉर्मली इन इफ यू गो टू यूट्यूब यू विल सी देयर विल बी पीपल हु विल बी डूइंग अ रिव्यू फॉर अ न्यूज़पेपर. ओके. न्यूज़पेपर का मोस्टली हम आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे रिव्यू होता है न्यूज़पेपर का रिव्यू. बट नाउ वी आर थिंकिंग टू स्टार्ट a review of Google News. Now मैं क्यों Google News लिया? The reason I take Google News as as an place where I want to do a review because Google News क्या करता है, बहुत से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो भी हैं ई न्यूज़ बाय द वे, उनका डेटा एक ही जगह पे स्टोर करके रखता है. एंड देन वी गो एंड सी, वी डोंट हैव टू गो टू एनडीटीवी, वी डोंट हैव टू गो टू इंडियन एक्सप्रेस, वी डोंट गो टू फाइनेंशियल एक्सप्रेस. We can get everything in the Google News. Okay, this section is very good, by the way. We'll do a review on that, no doubt about that. But before that, I just wanted to let you know, okay, we are going to do a review on your Google News. Okay, and let me know if you guys are happy, or like, please put up your comment. I'll be love to hear from you that what is your opinion on this, to have Google News as a place where we want to do a review. Okay, that is the main what you say, the plan to have Google News to be reviewed. Okay, and please post your comment. It's a live session, so please post your comment. At the same time, we'll have a vote for you to give your vote on how do you see that e-news is better than a normal classical newspaper. So please put up your point there. At the same time, we can give you no opinion on your questions on the topic we are going to do. We'll review our headline, we'll review top stories, we'll be reviewing world affairs, then national affair means Indian affairs, and then we'll go to share market and a bit of business news. We'll do a review. We're not going to give any prediction, we are going to do some review. And then if time limits, then we'll go and answer your questions, whatever you guys will have the question for me. So meanwhile, let's start with the uh, top stories. Okay, so today's top story is GN Azad quits कांग्रेस. बहुत बड़ी न्यूज है गाइस, दिस इज अ वेरी बिग न्यूज कि इतने दिन से जो कांग्रेस पार्टी में रहा है गुलाम नबी आजाद, ये आज क्यों कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं. इट्स ए वेरी बिग न्यूज. लेट्स गो इनटू डिप इनटू दैट, लेट्स डीप डाइव ऑन टू इट. ओके, सो मैं बोला था आपको कि दिस गूगल न्यूज हैव दैट एक्सेस टू ऑल द टॉप स्टोरी न्यूज. ठीक है ना, तो उससे क्या है, हम लोग बहुत मतलब रिव्यू वगैरह हर बड़े बड़े न्यूज़पेपर से हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, आई होप यू गाइस आर एबल टू सी माय स्क्रीन वेल. ओके, लेट्स मूव. सो गुलाम नबी आजाद क्विट्स कांग्रेस and it's a live update, and they want to launch a new party, जो कि बहुत बड़ी खबर है. कांग्रेस से लोग बाहर जा रहे हैं. बहुत से आपने देखा होगा रिसेंट पार्टी जो कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, दे आर टेकिंग नो बिग स्टेप बिकॉज कांग्रेस के बारे में अब आप लोगों को तो पता ही है. आई रियली डोंट हैव टू look into that, but looks like this Congress party has come to an end, because जब बीच में हुआ था ना कि सोनिया गांधी, द गांधी फैमिली वांट्स टू रिजाइन एंड दे लॉस्ट इन पंजाब, दे लॉस्ट एवरीवेयर, मतलब दिल्ली से दे हारे. उन्होंने अभी तो कोई स्टेट नहीं है, मतलब आई थिंक राजस्थान है यार, मतलब बहुत ही कम स्टेट है जिसमें वहाँ पे उनका रूल है. So I really see that it is going to be the end of
हाँ, कांग्रेस उसी हिसाब से ऑब्वियसली जो भी पार्टी कांग्रेस साथ जुड़ी है दे आल्सो वांट टू टेक आउट। सो गुलाम नबी ऑफिशियली उन्होंने बोला था। इवन उन्होंने ये भी बोला है कि डिसीजन टेकन बाय राहुल गांधी और हिज गार्ड। तो ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी नो ने ये डिसीजन लिया, ये क्या हुआ है उसके ऊपर मतलब उन्होंने टिप्पणी दिया है। सो look like one of the Congress tallest leader गुलाम नबी आजाद क्विट पार्टी ऑन फ्राइडे, दिस फ्राइडे हुआ है। एंड राहुल गांधी को उन्होंने ये बोला है कि चाइल्डिश बिहेवियर, ग्लेयरिंग इमेच्योरिटी एंड इनएक्सपीरियंस्ड टू रूल द पार्टी। सो उन्होंने पूरा क्लियरली बोल दिया है कि भाई साहब तुमसे ना हो पाएगा। and that has been comprehensively destroyed Congress by राहुल गांधी। यही कमेंट आ रहा है। मिस्टर आजाद जो 73 इयर्स के हैं, सीनियर मोस्ट लीडर इन कांग्रेस, हैज नाउ क्विट। सो आपका क्या ओपिनियन है कि कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद छोड़ने से उनका मतलब हाउ डू यू नो टेक दिस न्यूज? Meanwhile, moving to another one, गांधी रेजिग्नेटर के लिए उन्होंने बोला था कि हमें गांधी जी का रेजिग्नेशन लेटर चाहिए एंड दे वांट गांधी टू बी आउट, बट कोई इतना ध्यान नहीं दिया। इफ यू सी टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, सो यू कैन कवर लॉट ऑफ न्यूज हियर इन गूगल न्यूज, नो, so it will be pretty easy. Okay, let's move into the next. Not yet time to drop caution on the growth front, say सीतारामन। अभी सीतारामन के ऊपर जाएंगे जो अभी लेटेस्ट इन इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने बोला है कि नॉट येट टाइम टू ड्रॉप कॉशन ऑन ग्रोथ फ्रंट। सो यूनियन मिनिस्टर आल्सो हिंटेड द सस्टेन सपोर्ट टू एक्सपोर्ट as they are facing external headwinds to step attract more foreign investment। more foreign investment तो अभी तो पता ही है ना मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट का सिचुएशन क्या है, how other country is really struggling with financial crisis। तो मुझे कहीं तो नहीं लग रहा है कि अभी इतने जल्दी बहुत से फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ये तो मुझे तो फील आ रहा है। लेट टेक अबाउट चाइना, यूनाइटेड किंगडम, एवरीवन इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज ड्यू टू the COVID we had, and financial crisis everywhere. Almost 10 to 12 countries are now in the financial crisis, and हमारे पास ही पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चाइना, not China is going through a financial crisis, but they have a financial problem, right? बांग्लादेश है, so हमारे पड़ोसी most of the countries are in Asia, अफगानिस्तान हो, मतलब are struggling with their financial crisis। so मुझे अभी तो सिचुएशन नहीं लग रहा है कि ज़्यादा हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी मिलेगा। सो इंडियन मिनिस्टर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है निर्मला सीतारमन said that international monetary funds IMF latest projection is 7.4% economic expansion for India in 2023। so IMF जो है, मैं थोड़ा IMF के बारे में बताता हूँ। IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि मोस्टली मॉनेटरी सिचुएशन को और फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालिसिस करता है हर कंट्री के लिए। एट द सेम टाइम दे प्रोवाइड लोन्स टू डिफरेंट कंट्री। जैसे अभी IMF के लिए बेल आउट के लिए पाकिस्तान ने बोला है, श्रीलंका बोला है, बांग्लादेश अभी कांटेक्ट कर रहा है। सो IMF नॉर्मली गिव्स लोन एंड they start interfering on the political instability or economical crisis decisions on that country। तो IMF ऐसा है, तो उसने बोला है कि इकोनॉमिक एक्सपांशन इंडिया का FY फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.4% होगा। तो ये not a bad number, it's a really decent number I can say, looking at the situation right now in Asia। एशिया का आप सिचुएशन देखोगे और 7.4% का इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर इज नॉट अ बैड as far as I assess this situation, but there will be a downside risk from external factors। it was not yet time to drop caution। so वो बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे अभी चाइना और ताइवान का चल रहा है, यूक्रेन रशिया से जो गड़बड़ चल रही है, एंड बहुत से
सिचुएशन जो है उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो इंडिया को हो रहा है, राइट? नॉट ओनली इंडिया, एवरी होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, नो डाउट। सो बट व्हाट शी इज सेइंग दैट हाँ प्रॉब्लम है एक्सटर्नल फैक्टर में, बट अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा 7.4% का इकोनॉमिक ग्रोथ है, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट ही शी इज सेइंग। श्यामलाल मजूमदार को उन्होंने इसके बारे में फीडबैक दिया था। Yeah, instead these are the external headwinds, but she is not worry about that. Okay, और एक कंसर्न भी आया है, रिलीज हुआ है कि फेवीज, फ्री फेवीज इन ईच स्टेट। आप कोई भी स्टेट में जाइए, वहां पे गवर्नमेंट फ्री फेवीज दे रहा है टू गेन द वोट। दैट हैज बीन अ पेन एरिया फॉर for India recently, even in Sri Lanka, even in Pakistan, even in underdeveloped or developing countries or Asian countries mostly, जहाँ पे लोग का मिनिमम नीड्स नहीं है, वहाँ पे फ्री फेविस दे के वोट खरीदा जा रहा है। एंड यू गाइज ऑल्सो नो, आपको भी पता है, आपके स्टेट में भी वही चल रहा है, हर स्टेट में यही चल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द फ्री फेविस are not going to create money, not going to create your job, even उसको वो जो बंदा है उसको लेथर्जी का लेजी बना देगा if you give free things. So I'm if you see, if you hear here if you see that के Supreme Court has also expressed a concern over the culture of fees ahead of election. It's a very big news because भाई कोई भी पॉलिटिशियन तो इसको बंद नहीं करेगा। क्यों बंद करेगा? तो वो फंसेगा, वो पॉलिटिशियन फंसेगा और वो नेक्स्ट ईयर जीतेगा नहीं। बोलेगा कि हम फ्री में दे रहे हैं 500 रुपीज फॉर ऑल द लेडीज, ऑल द फीमेल इन आवर स्टेट, एंड नेक्स्ट मंथ वो बंद कर देगा, तो वो वोट नहीं मिलेगा एंड उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो इसलिए आई रियली डोंट सी कि कोई पॉलिटिशियन विल टेक दिस डिसीजन, वो मे बी मोदी हो या हुएवर पॉलिटिशियन विल कम इन द स्टेट और इन द कंट्री, बट we have supreme authority of India judiciary is Supreme Court. Now Supreme Court is showing a concern of the culture of fees ahead of election, which is a really good news for us, and I'm sure Supreme Court should look at this situation right now। जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी इंडिया में भी बहुत से स्टेट में है, आप पंजाब जाइए, आप राजस्थान जाइए, आप वेस्ट बंगाल जाइए, आप आंध्र प्रदेश जाइए, आप I think yeah, these 4 or 5 states are there who are really struggling with the financial crisis, with the financial debt. So, and FEBIS is one of the region. I'm not saying all the region, but FEBIS, free FEBIS are one of the region. And मैं बोलूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर दे शुड हैव ए एडवाइजरी कमिटी, और एडवाइजरी कमेटी इसको एनालाइज करना चाहिए कि कितना हर स्टेट में खर्चा हो रहा है ऑन द फ्री फेवीज, एंड हाउ मच गेन और हाउ मच बेनिफिट वी आर गेटिंग एज ए स्टेट, एज ए गवर्नमेंट, नॉट एज ए द ह्यूमन बीइंग आर गेटिंग बेनिफिट, ठीक है, बट उससे कितना फायदा हो रहा है? कुछ जॉब क्रिएट हो रहा है क्या? कुछ इकोनॉमी में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या? हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है क्या? मतलब हमारा फायदा क्या हो रहा है, और एट व्हाट कॉस्ट, हाउ मच वी आर स्पेंडिंग ऑन अ ईयरली बेसिस। ठीक वोट होगा उससे पहले फेवीज आएंगे, फिर पूरा 4 साल तक फेवीज का ठीक से एलोकेट भी नहीं होगा। सो उस पे हमें ध्यान देना है, एंड होपफुली सुप्रीम कोर्ट विल लुक इनटू दिस सिनेरियो in a serious manner. By the way, आपको क्या लग रहा है कि फ्री फेवीज इन द स्टेट is a right way to do this, getting the votes and helping the poor people or needy people on the state? How much you see? Please put it on the comment box. Let's move on to the another news. ये सोनाली पोगट का डेथ के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। सम ड्रग some got related, and कुछ क्लिप वगैरह मिला है, and it is getting viral. The TikTok star at the same time, पॉलिटिक्स में भी उन्होंने अपना नाम कमाया हुआ है, बट उनके डेथ के ऊपर बहुत से हंगामा हो रही है।
ओके, बात ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। केजरीवाल के ऊपर थोड़ा चल रहा है कि केजरीवाल एंड बीजेपी दे आर फाइटिंग ईच अदर, क्योंकि केजरीवाल जो जो उनके जो असिस्टेंट है उनके घर में टैक्स रेड हुआ है ऐसा ही कुछ सिचुएशन है अभी। न्यूज़ वगैरह चल रहा है हर जगह, बट दे बीजेपी ने कोई स्टेटमेंट तो दिया नहीं है, बट केजरीवाल इज कीप ऑन गिविंग लॉट ऑफ कमेंट, बिकॉज गुजरात में उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए ही इज ट्राइंग, सो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत गर्मा गर्म माहौल है। लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर यो लाइव सेशन is your world affairs, उसके ऊपर हम देखेंगे। meanwhile let me move out to top stories and now we'll talk about world affairs। ठीक है, वर्ल्ड अफेयर्स में हम आज बात करेंगे यूएस पुलिस अरेस्टेड वुमेन फॉर असल्ट ऑफ इंडियन अमेरिकन। सो ये एक हर जगह मैंने कल रात को ही देखा था ये चीज कि इन एक अमेरिकन उन्होंने इंडियन को मतलब दे gave some head speech, or I can say they give some comment which really people didn't like it. He's a Mexican American assaulting a group of Indo America को उन्होंने assault किया है। उन्होंने क्या बोला है कि I hate you Indian, all these Indians come to America because they want a better life, and उन्होंने लाइव वीडियो पे ये बोला है, and she keep on saying f bomb, the language is not even the great, and this video get gone viral, and it is a really desperate to matlab, this is a desperate situation right now. This is not the something we would be looking at in this world, with you know with an American which are really in a cosmopolitan country, and we really don't want to happen to any community, not about India. It shouldn't happen to any community. This is the four Indian women are verbally abused, physically attacked, and threatened at gunpoint by this racist woman who has been identified as a Asmi Armadarange Upton. Let's see if we can hear this. Why do you make comments like that? We even talk to you. Why did you walk up to us to talk to you? We were minding our own business. Fucking Indians. That's why. Oh, these fucking Indians. They come to America because they want a better life. But they're obviously not living the great life in India. You are the one who's racist. Why do you make comments like that? Come from our country and you want. You just said you're Mexican. How does that make I'm a sense? Mexican American. I was born What makes you think that we are not Were you born Americans? here? What makes you think that we are Because not? of the way you speak. Because I'm a I'm not Mexican American, But and I'm I not speaking speak to you. English. See, you're the one who came and talked to me. I'm talking with my friends. Like everywhere I fucking go, you Indians are fucking everywhere. If life is so great in India, why the fuck are y'all here? Turn your fucking camera off. I'm happy to talk. Turn it off. Why should I turn it off? You're the one who came and talked to me. I'm Mexican. I'm Mexican. And I paid my fucking way here. What? Why would you come and talk to us and make a racist Turn the camera off. Don't I'm not touch me. gonna Don't touch me. I'm You not don't gonna touch me. talk to you. Oh my god, guys, record. She's hitting me. She's hitting me. Oh my god. She's hitting me. Oh, she's hitting me. This is ridiculous, guys. This is ridiculous. This is not how we should be getting treated. I did not talk to you. I did not talk to you. Do not Turn the fucking camera off. go back to your car. I am. Go back to your car. Don't go back to your car. Go back to your car. Tell me what you fucking do. But don't tell me to do what. Turn the fucking phone off. Just shut up. You shut up. You shut up. You better turn that goddamn phone off, or I swear to God, I'll fucking shoot your ass. I did not talk to you. Turn it Do off. not. Turn it off. So this is how the situation right now we are living in this world. Obviously, we are not happy, and we got a press release from America that
Plano police officer responded to this situation, and they have arrested her on the assault, which is really good step. But this is not how we should be treating the other community. So that's how the situation right now. On this, U.S. police arrested a woman for assaulting Indo America, by the way. Okay, next moving to the next world affair news is about more than 4 million in Pakistan affected by flood. Oh my god, this is not good at all. With Pakistan really struggling with economic crisis, and we really don't want another a natural calamity to hit Pakistan. ये नहीं चाहिए हमें, and we really care about them as a country who has been though we don't have a good relation, but at the same time we don't have a problem with Pakistani people. And I see that there has been a declared emergency in the wake of heavy rain in the country, and officially हमने this year flood का जो situation है थोड़ा ज़्यादा ही impactful है, and you can see how they are staying in tambus, and people are leaving their places, and with the vehicle. Let's move into a few more. Let's me see if we have more. Okay, look at people are staying, and they don't have a house. पानी के लिए भी problem है. Look at the scenario right now. It's pretty not good. Even natural calamity हो कहीं भी country में हो, it's really not good. And again, on the Pakistan, obviously it is painful to see that. Next, move on to next one. India's vote to allow Zelensky speech was not against Russia. ये बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको ये क्यों एक बड़ी मुद्दा है. In first, India had voted against Russia's motion to stop Ukraine president from addressing UNC virtually. India on Thursday denied that it is voted against Russia. तो इन्होंने clearly बोल दिया है at UN Security Council during the procedural vote whether to allow Ukraine president to address the council virtually during the debate on Ukraine situation on August 24. तो यहाँ पे इंडिया जो वोट जो है वो रशिया के एगेंस्ट में नहीं है. इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने, मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ, जो यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है क्या जेलेंस्की, ही वांट्स टू एड्रेस द काउंसिल वर्चुअली ड्यूरिंग ए डिबेट. इसमें वोटिंग का सिचुएशन था कि वोट मतलब यू हैव टू वोट दैट वी विल अलाउ जेलेंस्की और नॉट, ये सिचुएशन था. इसमें इंडिया ने वोट दिया टू अलाउ जेलेंस्की स्पीच, which is absolutely fine. But now media and everyone is make it into a big issue, saying that it was against Russia. But I am saying that what I am understanding from here, that Zelensky has all the rights to talk, right? We can stop him, and if India's vote is not going to matter on this topic, and that's what MEA has make it clear for everyone that Zelensky का जो participation है on the council and India has voted in favor of it. So ये है थोड़ा मसला. I really don't think कि इसमें कुछ इंडिया का मतलब रशिया के अगेंस्ट एंड ऑल ये तो नहीं होना चाहिए. But again, we need to see how it turns out to be when Putin will look into this matter. Saudi Arabia to invest 1 billion in cash-strapped Pakistan. So another, that's what I'm talking about. Pakistan is really struggling on financial crisis. उनका बहुत बड़ा मतलब IMF पे उन्होंने bailout के लिए मांगा है. वो it will be I think 7 to 8 bailout for him for them. And उनकी political situation भी खराब है. Sri Lanka is buying for a bailout. Now Bangladesh will join the group. So situation बहुत ही खराब है. So now lot of rich countries like Saudi Arab, even some cases, Russia, maybe China, they will take this advantage of investing on Pakistan. At the same time, they get their benefits which they really want from there. So इसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं. 1 second, राउटर से देखेंगे अच्छा रहेगा. राउटर्स क्या बोल रहा है? Saudi Arab to invest 1 billion. Pakistan Saudi State TV ने ये क्लियर बताया. यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इतना. चलो अच्छी बात है. लेट्स मूव इनटू दिस वन, एनडीटीवी.
Saudi announced 1 billion invested on the cash trap Pakistan in the both economic and political uphill. Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah and his Pakistani counterpart Bilwal Jadari, इन्होंने इस चीज पे बात किया है, and they bring this point that they are going to invest on Pakistan with a 1 billion, and Pakistan get 2 billion from Qatar, 1 billion from Saudi Arabia under the umbrella deferred oil facility, and USD 1 billion from UAE. जब मैं वही बता रहा था कि बहुत बड़े बड़े rich country are now investing on Pakistan. That's what I am trying to say. There is a benefit of investing on Pakistan right now, because they need the money, they are desperate. So once they will be dealing with 2 billion, 1 billion, and whatever the money will be, so there will be benefit attached to it. There will be conditions attached to it, and those conditions Pakistan has to agree with it. And this is not a real or good situation for a country who will be getting loan from different countries who are more stronger, more richer to that that particular country. At the same time, they are getting the benefits out of it because of the favor of helping financially. So this is the situation right now with Pakistan. Chinese missile tracker see prospecting Indian Ocean and bed south of Sri Lanka. So this is the situation of missile tracker जो है उन्होंने लगाया है इंडियन ओशन in a bit of South Africa sorry श्रीलंका के साइड में. Suspend 26 Chinese flight over COVID cases. Okay. ऑब्वियसली ये तो अभी सिचुएशन चल रहा है ना यूएस एंड चाइना का, तो इसमें एक है 26 फ्लाइट्स गेट कैंसल्ड ऑन द कोविड फ्रंट. मतलब कोविड फ्रंट तो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट टीट फॉर टैट. ईयर लेटर अफगानिस्तान मीडिया स्ट्रगल टू सर्वाइव, नो लो ओनली रेस्ट्रिक्शन. अफगानिस्तान का तो हाल खराब है, मैं बात ही कर रहा था इकोनॉमिक सिचुएशन, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है. हाफ द चाइना हिट बाय ड्रॉट इन द वेस्ट हीट वेव. मैं बोल रहा था चाइना का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, सो आई रियली सी के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उनको होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस नॉट फाइनेंशियल क्राइसिस बट ऑफ इम्पैक्ट टू चाइना. चाइना का फाइनेंशियल थोड़ा सा खराब है क्योंकि कोविड 2 बार हिट कर चुका है. कोविड उसके मतलब what I can say, they really कोविड ने पूरा उसको एक बड़ा इम्पैक्ट दे के गया था. और सेकेंड जो हुआ उसमें भी और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, एंड लॉट ऑफ कंट्रीज आर नाउ हैविंग ए रेस्ट्रिक्शन ऑन चाइनाज प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ कोविड. सो इम्पैक्ट तो है भाई, ठीक है. ये कभी देखेंगे. इफ यू गाइज रियली वांट तालिबान 2.0 overview, please let me know on the comment box. We can discuss on that, no doubt about that. मैं बोल रहा था यूके का क्या हाल है. यूके का सिचुएशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है राइट नाउ. फाइनेंशियल सिचुएशन भी खराब है, इलेक्शन चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है यूके में भी ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट. पीएम शहबाज ने कुछ तो इमरान के जो पॉलिसीज हैं ऑन डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स, उन्होंने उसको बैन को हटा दिया है. Oh my God, this is ridiculous, right? Oil ends 100 billion advent okay to run daily US interest by investors.com. So this has been more on your world affairs which we are going through right now. Let's move on to national affairs. Okay, I see one Woods and we have only 0 view. It's absolutely fine the first time. I'm sure we'll have more people coming in upcoming days. Coming to India, थोड़ा देसी न्यूज़ देखते हैं. आज़ाद के बारे में तो बात कर लिया है. पीएम मोदी टू लॉन्च अटल ब्रिज ऑल अबाउट फूड ब्रिज ऑन साबरमती रिवर. साबरमती रिवर पे
अटल ब्रिज अभी बनने का प्लान है, एंड नॉट प्लान है, लॉन्च होने का प्लान है. So this is one more news, and Delhi police says no to Munwar Faruqi. So दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया है. बहुत से ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, ओके, स्पेशली ऑन हिंदू, नो, हिंदू कम्युनिटी जो भी है, and they are putting up question on Munwar Faruqi's show because of his jokes on religious joke. NDTV, Bomami says BJP has given him a free hand. NDTV exclusive. Baswaraj Bomai says that BJP has given him a free hand. ये तो एक को concern है यार. Why the hell news channel will be getting sponsored from political party? This is not something we will be looking. Yeah, I understand that there won't be a possible of being the best transparent news right now in this world. मैं जानता हूँ, मतलब दिस इज हाउ इट इज, राइट. क्योंकि वहाँ पे स्पॉन्सर चाहिए, वहाँ पे पैसा चाहिए तुम्हें रन करने के लिए एक बिजनेस, और तुम नो हर कोई मिनिस्टर से हो या बड़े लोगों से पंगा नहीं ले सकते. इट वॉन्ट बी दैट इजी. आई टोटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बट माई पॉइंट इज दैट गेटिंग स्पॉन्सर्ड, ये प्रॉब्लम है. ठीक है, तुम तो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, मेरे को समझ में आ रहा है, बट गेटिंग स्पॉन्सर्ड इज समथिंग लाइक, पता नहीं यार कैसे डील करेंगे. एंड एनडीटीवी इज वन ऑफ द वन ऑफ द गुड न्यूज चैनल इन इंडिया, and if this is going to happen with this type of channel, it is not going to work it out for, and it is not good for a country like India. At the same time, मैंने ये भी सुना है कि अदानी also stake खरीद रहे हैं very aggressively on NDTV. So and you know Adani and Modi's relation, so I don't want to comment on that part, but I still see कि ये सब नहीं होना चाहिए. ये फ्री एंड का मतलब जस्ट बात चल रहा है. मैंने बोला था सोनाली फोगट का डेथ, ड्रग्स एंड बिट्रेयल एंड नो मोटिव, उसका क्लिप भी आया है, आप लोग देख सकते हैं. इफ लेट्स सी इफ इट इज देयर, आई विल ट्राई टू पुट इट अप फॉर यू गाइस if the clip is available for me to watch. Let me see. Okay, Nollywood का tearful daughter shoulders bare last right, मतलब लास्ट सिचुएशन राइट नाउ. वीडियो तो मेरे को नहीं दिख रहा है. हाँ यार, दिस इज द वीडियो. लेट्स सी इफ वी कैन सी इट राइट नाउ. लेट्स सी इफ इट इज कमिंग. सो एनडीटी में ये क्लिप छोड़ा है, वो क्लिप के वजह से ही मतलब सिचुएशन को थोड़ा अंडरस्टैंड कर चुके हैं, सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया है with this clip only. Let me see if I can get this clip for you guys right now. Let me see. वो क्लिप दिख गया तो अच्छी बात है, आपको दिखा दूंगा मैं. That clip has given a more clarity that ये तो एक्सेस वगैरह मांग रहा है. एड खत्म होने दो, so we'll see that. Okay, this is a big story. Was forcibly drugged by her associates while partying at a restaurant in Goa. This is what the police has said while they've arrested two of the accused, citing security camera footage and alleged confessions. The police said that Sudhir Sangwan and Sukhwinder, associates of the Bigg Boss contestant Sonali Phogat, made a confession after sustained questioning in connection with her death. Sonali Phogat was 42 years old. She visited the Curly's restaurant Monday night and was brought dead to the St. Anthony Hospital in Anjuna in North Goa district from her hotel the next morning. While it was initially seen as a case of a heart attack, her family sensed that there was something wrong and demanded a thorough police investigation. Sonali's condition, as you can see in the CCTV footage, is... So that, of course, is the CCTV footage. The last time that Sonali Phogat was seen alive. And the big question, of course, is on her death now, with the police having arrested two of the suspects, and the latest information, of course, is that they have in fact... Not really good, right? Situation is pretty... आप देख सकते हैं सीसीटीवी में यही दिख रहा है कि it is she got drugged and look like 3 to 4 people are get involved in this. अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है इसके ऊपर. तो ये अभी सिचुएशन, पुलिस स्टेटमेंट राइट नाउ.
करली क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलएच सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह इसी के साथ में क्लब में पार्टी कर रहे हैं, और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया। So this is a news for you guys कि अभी इस चीज को, ये मामला थोड़ा बढ़ रहा है, and we need to see, we'll review on we'll see some updates from there. Governor sits on election commission verdict in case of Jharkhand CM Hemant. You don't need to be make India number one, stage for set for India twin tower demolition. ओके, टावर डिमोलिशन हो रहा है। हेड स्पीच केस इन्वॉल्विंग योगी, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्शन। आर्मी ब्लास्टर मिलिट्री कैपेबिलिटी टू सेट अप स्ट्रॉन्ग ड्रोन्स फॉर सर्वाइलेंस क्लोज रिस्क। आर्मी थोड़ा हाई अलर्ट में है। फीफा लिफ्ट सस्पेंशन, बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडियन फुटबॉल के लिए कि फीफा हैज लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड वोमेन्स वर्ल्ड कप under 17 women's world cup will take place in India. It's a really huge boost for Indian women football enthusiastic people around us, and it will be just a start of India to a football world. And remember, if India will enter the football world with a storm, trust me, it is going to overtake the way IPL get overtake of cricket. So I would love to see more more encouragement to football in India, and it's a really good news, a relief for Indian all India Federation के भाई बैन खत्म हो गई भाई। मेजर अर्थक्वेक इन जेके, ये तो हुआ है रिसेंटली, आप लोगों ने पता ही होगा कि ऐसा उधर इधर उधर रिमार्क मार देते हैं लोगों ने। अभी ये भी बात हो रही है कि डिजिटल पेमेंट्स को चार्जेबल करने का, मतलब जो यूपीआई आप यूज कर रहे हैं उसको चार्जेबल करने का भी प्लान चल रहा है, बट निर्मला सीतारमन ने मना कर दिया है, क्लियरली मना कर दिया है कि नॉट द राइट टाइम टू मेक डिजिटल पेमेंट चार्जेबल। तो वो चार्जेबल करने के लिए राजी नहीं है, बट चार्जेबल हो गया तो इट वॉन्ट बी इजी फॉर पीपल, बिकॉज पीपल वांट टू हैव, वी शुड एनकरेज पीपल टू do the digital transaction. We don't want people to carry cash. उसमें क्या ट्रांजेक्शन पता नहीं चलेगा, गवर्नमेंट को कुछ भी आइडिया नहीं आएगा, इसमें आइडिया आएगा और इट्स अ गुड थिंग टू हैव। एंड चार्जेबल करोगे तो अगेन यू आर गोइंग टू डीमोटिवेट पीपल टू यूज द डिजिटल वन। तो आई रियली सी दैट दिस अ गुड मूव फ्रॉम सीतारामन। From AIB to AAP, Vijay Nair ended up in the liquor scam. Why Nepal is not letting go Gorkhas in Indian Army through Agnipath? नेपाल क्यों मना कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत है। घाट्स गो अंडर वाटर इन वाराणसी, कैरावन टेक प्लेस टेरेस, ओके। थोड़ा बारिश थोड़ा बढ़ गया है। वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम फ्लेक्सिबल वर्क नीड फॉर फ्यूचर, पीएम मोदी। पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के ऊपर थोड़ा बात किया है कि वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम एंड द फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस नीड्स फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए वो जरूरी है। एंड वी सी द बेनिफिट्स राइट। जब वर्क फ्रॉम अकेला भी अच्छा नहीं है कि एलोन वर्क फ्रॉम इज नॉट गुड, इवन वर्क फ्रॉम ऑफिस इज नॉट गुड, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड मोड विल बी गुड टू हैव, एंड पीएम मोदी ऑल्सो एनकरेज दैट। UGC issues list of 21 fake university. This is the situation of Indian education system. इतने 21 फेक यूनिवर्सिटी इंडिया में हैं। फेक यूनिवर्सिटी ऐसे ही तो बन गई नहीं गया होगा, उसका अप्रूवल कोई तो पॉलिटिशियन दिया होगा, किसी ने तो हेल्प किया होगा। दिस इज रियली अ क्रोनिक प्रॉब्लम। ऐसे ओनली फेक यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसे बहुत से सिचुएशन है, फेक कॉलेज, फेक कोर्स, हम लोग फेक में ही हमारी जिंदगी कट रहा है यार। हमारे पास सिस्टम्स हैं, बस सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा है विद करप्शन।
Okay, Vikrant, the Indian first aircraft carrier to be commissioned on September 2, India to launch 6G and invest in gaming and entertainment solution. जैसे मोदी ने अभी बोला है, and 5G का भी रोल आउट हो जाएगा, and we can see that Adani has a better role to play here in 5G. Same with Reliance. Airtel का क्या होगा वो तो टाइम बताएगा. और ज़्यादा कुछ हमारे पास नहीं है इसके ऊपर. Let's move into our next section, which is share market and business. So we'll talk on that. So Acer Steel to sell infra asset to Mittal Nippon Steel. ये बहुत बड़ी न्यूज़ है एसर स्टील के बारे में. 19,000 करोड़ का रहेगा ये. लेट्स सी हाउ इट गोज. रिलायंस इंडस्ट्री एजीएम स्टॉक ट्रेडर्स गाइड टू ऑयल टू रिटेल गेन. Giant Financial. Wall Street reacts to Powell. Very clear pushback of 2023 Fed pivot. Stock in news is Sarma, SGS, HDFC Bank, Nika, ICICI Pru Life, and Yes Bank. Okay. ये another big news है कि the investors are selling their stake from Zomato. Okay, and one of them is Sequoia is selling their 4.4% stake from Zomato, which is really not a good news for Zomato right now, with almost 40% down from the IPO rate in the market right now. ओके, सेंसेक्स उसके ऊपर जाएंगे. सेंसेक्स के ऊपर अदानी ग्रुप एसेट RRPR is bound to transfer. मैं बोला था NETB के बारे में. They are going very aggressively on the NETB. ड्रीम फॉक्स के जो IPO आए हैं वो 56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, विच इज़ रियली गुड कि वो लिस्टिंग में बेनिफिट देगा. बिटक्रेट, ब्रिज, डॉजकॉइन, सीवा प्राइस प्रिडिक्शन. उसका प्राइस प्रिडिक्शन है, आप थोड़ा जाके देख सकते हैं. जो भी क्रिप्टो है उनका थोड़ा प्रिडिक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. HDFC बैंक अनाउंस टू एक्वायर ऑलमोस्ट 10% स्टेक इन दिस इंश्योरर. डिजिटल गो डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस जो है उसमें 10% स्टेक खरीदने का HDFC बैंक जा रहा है. एंड HDFC हैज बीन डूइंग वेल दिस टाइम, दिस फाइनेंशियल ईयर. महिंद्रा बोलेरो विथ न्यू लोगो लॉन्चिंग सून, क्योंकि महिंद्रा का लोगो चेंज होगी ना, तो उसके लिए वो लोग लॉन्च कर रहे हैं. ईडी सर्च 5 इमेजेस ऑफ कॉइन स्विच कुबेर एलिज्ड मनी लॉन्ड्रिंग. ये क्वेश्चन आ रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो केस है कॉइन स्विच कुबेर के जो ओनर है उसके ऊपर 5 इमेजेस के ऊपर हम अभी दे आर डूइंग ईडी रिसर्च. मल्टी मेगा स्टॉक 1:1 बोनस शेयर. छोड़िए ये सब. First year commission of live agent, Bitcoin, street ends. Okay, nothing much on there. Let's move on to the market right now. So market has started with 36 point up with Nifty 50, Nifty Bank with 36 point up, and Nifty Mid Cap 100 is almost 170 up, which is really good. Mid Cap अच्छा परफॉर्म कर रहा है. Sensex is almost 60 up. So अभी यही हाल है. सेम RSGS जो मैं अभी बता रहा था is doing well with 90 rupees, a jump of 41.14%. Awesome man, this is really good. Yes Bank obviously going down to 16. टाटा स्टील भी अच्छा कर रहा है. अदानी पावर फिर से गिरा, कल गिरा था almost 425 से 375. now again we see a bit of fall for 80, almost 4.5% गिरा था कल से. ओके ओके. कुछ और तो है नहीं. ग्लोबल मार्केट में देख लेते हैं थोड़ा बहुत. ग्लोबल मार्केट में नास्डक इज ओके, ऑलमोस्ट नेट इन रेड. यूरोपियन मार्केट भी रेड में है. एशियन मार्केट में निक्की, स्ट्रेट टाइम्स, हैंगसेंग एंड ताइवान is doing well. Taiwan is doing well, it's good. But SGX Nifty, Singapore Nifty is not doing well.
एंड या इट्स अ मिक्स्ड सिचुएशन राइट नाउ। गोल्ड का प्राइस अभी 51,000 है, जो कि अगेन गिरा है। सिल्वर का 54, एंड या दैट इज हाउ इज ऑल अबाउट द मार्केट राइट नाउ। सो मार्केट अभी पॉजिटिव हुई है, बेटर है अभी फिलहाल। 5 स्कैन हुआ है, आईटी वर्स्ट हिट, पीएसयू बैंक अगेन, पीएसयू की तरह हुआ है, आईटी का वर्स्ट हिट हुआ है। और मार्केट तो अभी फिलहाल ठीक है, जो सिचुएशन बाद में था उसे थोड़ा बेटर हुआ है। एंड वी सी दैट वॉट एवर इन्वेस्टमेंट पीपल डिड ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर, उसका फायदा कुछ मिलेगा अभी। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। एंटरटेनमेंट में कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं बात करने के लिए। लाइगर मूवी नॉट डूइंग वेल, सिचुएशन थोड़ा ख़राब है। और बाकी तो ऐसा कुछ अभी मेरे को नहीं लग रहा है। एंड फ्यू फ्यू गुड न्यू मूवीज आर गोइंग टू hit the cinema hall near you. Okay, let's move to sports. Neeraj Chopra script history, become first Indian to win Diamond League title. So he is the first one to win the Diamond League title. FIFA का बारे में बात कर लिए हैं। Sarva Ganguly predict that he will be doing good. Virat Kohli will be doing good, and Sarva Ganguly says that आज एशिया कप स्टार्ट होगा श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में 7:30 PM, और इंडिया का कल मैच रहेगा अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये समझ में नहीं आ रहा है, पहला मैच पाकिस्तान तो कैसे कराते हैं यार, एक दो मैच थोड़ा हल्लू करने तो उसके बाद कराओ ना। ये लोग मतलब कुछ मतलब क्या करते हैं यार, स्टार्ट ऑन द पहला मैच इंडिया पाकिस्तान, दैट्स इट। मतलब मार्केटिंग के ऊपर ध्यान है। शायद अफरीदी नहीं खेलेगा, इतना सुनने को मिला है बिकॉज ऑफ इंजरी, और कुछ नहीं है। टेस्ट मैच इज गोइंग वेल फॉर इंग्लैंड, दे गॉट अ ह्यूज लीड। या दिस इज ऑल अबाउट, आई फील दैट। और के टेक्नोलॉजी में थोड़ा देख लेते हैं ना यार, क्या प्रॉब्लम है। माइक्रोसॉफ्ट एंड निंटेंडो हैव नो प्लान टू रेज देयर प्राइस ऑन कंसोल्स, गुड। इन्फिनिक्स नोट 2 प्रो, एप्पल, रेडमी, उतने कुछ है ही नहीं भाई साहब यहाँ पे। साइंस में कुछ है हलवली। Okay, critical test fight with NASA's return to moon schedule on Monday, which is good. NASA's Mars rover discovered volcanic rocks in Jezero, Qatar. 40 people got killed in asteroid 2022. Okay, ज़्यादा कुछ नहीं है। हेल्थ पे जाएंगे before ending our लाइव स्ट्रीम। मंकी पॉक्स जो है थोड़ा बहुत चल रहा है हर जगह, सिचुएशन थोड़ा खबर है। टमाटो फीवर इज ऑल्सो स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग टू द चिल्ड्रन, ओके, किड्स के लिए हो रहा है। और बाकी कुछ इतना देखिए आप मंकी पॉक्स का क्या चल रहा है। 3 out of 5 monkey pox case has been historical heterosexual contract, 2 show no sexual history, ये चल रहा है अभी फिलहाल। उसके ऊपर स्टडी चल रही है। कोविड का भी थोड़ा बहुत चल रहा है, स्वाइन फ्लू भी हो रही है, मतलब ये बारिश के टाइम पे थोड़ा बहुत, इवन डेंगू हैज गॉन अप। सो थोड़ा बहुत सिचुएशन हो रहा है रिसेंटली ड्यू टू दिस हैवी रेन। सो फिलहाल यही है न्यूज़ आपके लिए। एंड आई थिंक वी कवर मोस्ट लॉट ऑफ स्टफ टुडे। Please let me know if you like this content. Please subscribe, no doubt. At the same time, put your comment, put your suggestion so that I can improve. And the first time we'll go we'll try to be live on a daily basis. And yeah, this is all about. Thank you for joining. Take care. With this, professor is